हाय गाइस, वेलकम टू फ्रूगल फन। मेरा नाम सौमी है एंड मैं नॉट सो रिसेंटली जापान गई थी। वेलकम टू माय सीरीज वेयर आई टेल यू अबाउट हाउ टू प्लान अ ट्रिप टू जापान। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो मैं 3 पार्ट्स में करने वाली हूँ। सो टुडे इज गोइंग टू बी पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। इन पार्ट 1 आई टॉक्ड ऑल अबाउट how much a Japan trip should cost, मतलब हमारा ट्रिप का बजट कितना था. If you haven't watched it yet, जाके watch करो. And I've also posted a lot of travel vlogs from Japan, so you can take some inspiration from there as well. So in part 2 of how to plan a trip to Japan, I'm going to give you a lot of tips and tricks that I feel Indians को useful होगा. And in part 3, I'm going to share our travel itinerary. So without wasting any more time, let's get started. First category of the video is going to be visa and tickets. I also have my notes over here, so I might be looking down at my copy very often. So visa के बारे में बताओ तो it's not very difficult to get a Japan visa on an Indian passport because Japan और India के relations बहुत ही अच्छे हैं. It's also not very expensive. To know the exact price, go and watch this video, but you have to fill up a form, go to the VFS with your photograph, and also submit a few basic documents like आपका trip sponsor कौन कर रहा है, आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, those kind of things, and you should be able to get your visa within a couple of days. उसके बाद में टिकट्स के बारे में बताओ तो बहुत सारे फ्लाइट ऑप्शंस हैं इंडिया से जापान. From all the bigger cities like Delhi, Bombay, Calcutta, there are also direct flights, and of course there are a lot of indirect flights as well. It takes about, I think, 7 to 8 hours. And to buy tickets, I usually use the normal websites like Kayak, Skyscanner, Vigo, etc. Moving on to accommodation now. Now, my biggest tip for you for accommodation is to book Airbnbs and capsule hotels. अगर आप hostels में रहना prefer करते हो, then capsule hotels is a good option as well. So you can consider that, but don't go for hotels because hotels are damn expensive. मतलब बहुत ही ज़्यादा expensive है. Even the Airbnbs are expensive. But Airbnbs में फ़ायदा आपको ये हो जाता है कि कई बार आपको traditional Japanese houses मिल जाएंगे, which are called ryokan, and you will get an insight of how the local Japanese live. Also, Airbnbs in Japan are like very very well equipped. हम throughout the trip, 10 दिनों की trip थी हमारी, हम throughout the trip Airbnbs में थे except for one night where we were in a hotel. And सारी Airbnbs में toiletries थी. They had good like stock of coffee, tea, etc., toothbrush वगैरह सब कुछ था. मतलब it is very very well equipped. And one major tip is to choose your accommodation in the prime location, which is closer to most of the tourist attractions, even if you have to pay a little premium for that, क्योंकि उससे क्या हो जाता है कि आपको बहुत ही convenient हो जाएगा to go from one place to another and you won't spend a lot of time and money in traveling. Like transportation में आपको इतना इनकन्वीनियंस नहीं फेस करना पड़ेगा. तो अगर मैं आपको बताऊँ कि हमने कहाँ पे लिया था, सबसे पहले नाइट हम हिरोशिमा में थे. हिरोशिमा में पीस पार्क के आस बहुत ही पास, लाइक 5 minutes वॉकिंग पे हमने बुक कर रखा था एक एयरबीएनबी, विच मेंट सुबह उठ के हम बस निकल गए और हमने पीस पार्क देख लिया, विच वाज सो कन्वीनियंट. सेकेंडली हमने क्योटो में हिगाशियामा डिस्ट्रिक्ट में हमारा एयरबीएनबी था. दैट्स ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट बिकॉज आप अपने एयरबीएनबी से बाहर निकलोगे और चलते चलते ही आपको बहुत सारे श्राइन्स वगैरह दिख जाएंगे. इफ यू कैन गो फॉर बसेस एंड स्टफ, बट इफ यू आर ओके विथ वॉकिंग से 1-2 kilometers, you will easily be able to just walk and cover a lot of the places. ओसाका में हमने दोतोनबोरी जो है, जो कि वहाँ की सबसे हैपनिंग स्ट्रीट है, उसके सामने हमारा एयरबीएनबी लिया हुआ था, which meant that when we had to go to Universal Studios in Osaka, we had to take the train and the taxi and all that stuff. But ओसाका की लोकल बाकी चीज़ें देखने के लिए मतलब literally we walked everywhere. फिर टोक्यो में एयरबीएनबी चूज करना इज लिटिल ट्रिकी क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट एरियाज हैं एंड सारे एरियाज के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है. हमने जहाँ पे बुक किया था दैट वाज इन शिंजुकू एरिया. इट इज मोस्टली, दैट एरिया इज मोस्टली नोन फॉर इट्स लाइक नाइट लाइफ एंड लॉट ऑफ नियॉन लाइट्स all over.
एंड आवर अपार्टमेंट इन टोक्यो वॉज वेरी वेरी क्लोज टू द वहाँ का जो सबवे है उस स्टेशन के बहुत पास था. सो विच meant that whenever we had to visit a place which was not very close, like within walking distance, we could easily go and take the subway train. Lake Kawaguchi, this was our last destination, and this is the only place where we had booked a hotel, mainly because हमें माउंट फूजी देखना था एंड वहाँ पे मुझे फूजी व्यू चाहिए था. वी वर लाइक कि हम होटल में रह के भी वी कैन टेक द व्यू एंड वी कैन हैव अ गुड एम्बियंस, गुड टाइम बेसिकली सब लोग एक साथ में. तो हमने वहाँ पे एक होटल बुक किया था विच वॉज ऑब्वियसली लिटिल expensive because it was a view wala hotel and then it was also a hotel. Now moving on, let me talk a little bit about food. Food के बारे में बताऊँ तो food is like probably one of the high points in Japan. There is so many different kind of things, so I'll strongly urge you guys to try the local food. Even if you are a vegetarian, try the local food. You can use this app called Happy Cow, जो अगर app में आप अपने preferences डाल दोगे, it's going to suggest you different restaurants which are either vegan, vegetarian, or which have some vegan or vegetarian option. Some of the food that you definitely should try are ramen. Ramen में क्या होता है, जो broth होता है that's usually meat based, so it's difficult to find a vegetarian place, but again we managed to find through Happy Cow, so it's not that bad. Ramen खाओ. अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हो then sushi ज़रूर ट्राई करो. अगर आप बीफ खाते हो then you can try Kobe beef which is very very popular. एंड ये भी ध्यान में रखना कि जापान के जो कन्वीनियंस स्टोर्स होता है ना, वहाँ का फूड बहुत ही पॉपुलर होता है. मतलब यू कैन लिटरली सर्वाइव ऑन कन्वीनियंस स्टोर फूड. दे हैव गुड healthy options as well, like a salad and a sandwich, like a good sandwich, and they also have हॉट फूड जो आपको वो खुद ही हीट करके दे देंगे. अगर आपको वहीं पे 7-Eleven या लॉसन में बैठ के खाना है तो वहीं पे आपको हीट करके दे देंगे. प्लस देर आर सो मेनी ऑप्शन, सो मेनी यूनिक काइंड ऑफ फूड दैट यू विल गेट टू नो ओनली इफ यू गो इनसाइड अ कन्वीनियंस स्टोर. प्लस कन्वीनियंस स्टोर फूड इज firstly very convenient because at the end of a very busy sightseeing day, not always you want to look for a restaurant where you will get something of your preference, go and spend like 1 more hour in eating inside the restaurant. कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें बस थोड़ा मोटा कुछ खा के सोने का मन करता है. Especially then convenience store food comes in very very handy. They are inexpensive, there's so much variety, and they're literally at every corner in the cities in Japan. Okay, moving on, the last category I wanted to talk about is transportation. अब transportation भैया बहुत ही expensive है जापान में. मुझे तो बहुत expensive लगा. So my first tip over here is going to be make use of public transport as much as possible. Taxis काफ़ी expensive है, so make it a point to like buy day passes for buses etc. In a city and make most use of that. Secondly, I wanted to talk a little bit about Japan Rail Pass. मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जापान रेल पास लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बिकॉज लेट्स फेस इट, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. सो पहले तो जिनको पता नहीं है, जापान रेल पास इज लाइक अ बुलेट ट्रेन पास जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, बट प्राइमरीली काफ़ी सारी फास्ट ट्रेन्स आपको लेने को मिल जाती है, अवेल करने को मिल जाती है बिटवीन डिफरेंट सिटीज़. Now, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, it really depends on what your plan is and what your itinerary is. For instance, हमने 7-day pass लिया हुआ था और हमें काफ़ी ज़्यादा cost effective पड़ा, क्योंकि within that 7 days we went from Tokyo to Hiroshima, Hiroshima to Kyoto, Kyoto to Osaka, Kyoto to Osaka तो हमने 1-2 बार इधर उधर भी किया. And then last वाले दिन हम ओसाका से लेक कावागुची जा रहे थे, तो आधा पार्ट ऑफ दैट जर्नी ऑल्सो वी कवर्ड थ्रू द JR Pass बुलेट ट्रेन्स. बट फॉर इंस्टेंस आपका प्लान है टोक्यो में 4 दिन रहने का, फिर ओसाका में 4 दिन रहने का, इन दैट केस आई थिंक इतना फायदा नहीं होगा. सो डू योर कैलकुलेशंस, डू योर ओन रिसर्च एंड देन बाय अ JR Pass. इफ आई हैव टू गिव यू सम आइडिया, basically if you want to go from Tokyo to Osaka, that one way ticket itself costs about 13,000 Indian rupees. तो आप इमेजिन कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप ट्रैवल करोगे बिटवीन सिटीज़ उतना फ़ायदेमंद रहेगा आपको JR पास लेना. दूसरे ऑप्शंस जो है सिटीज़ के बीच ट्रैवल करने का, वो एक तो प्लेन है, और कई बार तो ऐसा होता है कि प्लेन इज़ जस्ट ओनली अ लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव दैन द बुलेट ट्रेन्स.
बट टाइम सेम ही लगता है ऑलमोस्ट, एंड बुलेट ट्रेन आर मच मोर कन्वीनियंट. तुम बैठो और आराम से पहुंच जाओ. सो इफ द प्राइस इज सेम, आई वुड स्टिल प्रेफर बुलेट ट्रेन, बिकॉज उससे आपको बुलेट ट्रेन एक्सपीरियंस करने को भी मिल जाएगा. बट इफ यू वॉन्ट टू पे लेसर, देन यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर ओवरनाइट बसेस बिटवीन सिटीज. काफी ज्यादा टाइम लेती है. फॉर इंस्टेंस आई थिंक जब टोक्यो से हिरोशिमा जाने के लिए पूरा का पूरा रात आपको लग जाएगा, जबकि व्हेन वी टुक द बुलेट ट्रेन इट टुक 4 hours for us. So depending on if you have time or if you have money, you have to manage your expectations. I think those were all the tips that I had in my kitty. अगर आपके कोई question हो, you can definitely leave me a comment down below and I'll make sure to answer them back. Also, third part of the video is going to be about our 10-day travel itinerary, which is usually the second most asked question whenever I tell people that I've come from Japan. So keep an eye out for that. होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अगर पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है. प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना विद एनीवन यू थिंक माइट फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना, बिकॉज आपके लिए तो फ्री है और मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, विच एंड आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट. And I'm going to see you super soon with another travel series. So keep an eye out for that as well. Till then, keep traveling and keep smiling. Bye!